Okay, friends, I'm to this session on this basic course in thermodynamics for your competitive exams, especially GATE. And as I told you that in the last class we were studying the equation of entropy, where we have seen key whenever there is an entropy coming into the system and whenever there is entropy going out from the system. Okay, so that there is a change in the entropy of the system, but that change is a bit more than what is in minus out. Okay. Now, having said that, we will actually just I'll write that equation one more time. So this was the basic equation we have with us. Just a minute. I think there is some technical glitch. I think it's fine now. Just let me check once my internet speed, um, because I think speed is a bit on the low side. Okay. Anyways, we'll continue now. So, cyclic integral of dq by t, or normal integral, not a cyclic integral, line simple integral over here. Let me take plus sigma. This is equal to change in entropy of the system. This is nothing but the consequence of Clausius inequality. And using this, we have solved a lot of problems. Okay. And now, if we actually think over here, then sigma was always greater than 0, equal to 0. Okay. So this is what we have discussed till now. Sigma can never be less than 0. Today I'll be further solving some problems, understanding about the entropy and its related problems. This would be lecture number 8, and this would be 11th of December 2020. Okay. Sorry. Let's start. So let me start with the problem only. A very interesting problem. Okay. So just a minute. Okay. So this is a problem over here, and I found it on Professor Somser's lectures. That's why his name is written over here.
just a small correction over here. This is 0.0. Okay. As the question states over here, an electric current of 10 ampere is maintained for 1 second in a resistor of 25 ohms. So we have a resistor over here. Whose magnitude is 25 ohms. And there is a current of 10 ampere flowing for 1 second. While the temperature of resistor is maintained at 27 degrees. So please mark the word maintained at 27 degrees Celsius. Maintained मतलब उसी पे बना हुआ है. यार देखो, आप सब जानते हो जब रेजिस्टर से करंट पास होता है तो थर्मल एनर्जी जनरेट होती है. तो थर्मल एनर्जी जनरेटेड in 1 second because of 10 ampere current passing through 25 ohm resistor is equal to I square R into T. I square is the 10 square, R is 25 ohm, time is 1. So this gives us a value of 2500 ohm. Oh, sorry, joules. So this much is the thermal energy generated in 1 second because of the 10 ampere current passing through 25 ampere or 25 ohm resistor. और फिर भी लिखा हुआ है कि इसका टेम्परेचर 27 डिग्री बना हुआ है. So what does that mean? That simply means that whatever is the thermal energy generated is being rejected. मतलब ये सिस्टम 2500 जूल थर्मल एनर्जी रिजेक्ट करेगा 1 सेकंड के अंदर. ये रजिस्टर, तभी तो उसका टेम्परेचर 27 डिग्री मेंटेन रहेगा. करेक्ट. What is the entropy change of the resistor? See, resistor की state change नहीं हो रही क्योंकि उसका temperature change नहीं हो रहा. Whatever thermal energy is getting generated has been rejected. That is what is meant by maintained at 27 degrees Celsius. तो resistor steady state में है इसलिए इसकी entropy change. Entropy change is a point function. Okay, तो steady state में state change नहीं हो रही है तो change will be 0. What is the resistor? What is the entropy change of the universe? So we know that dq by t plus sigma equal to delta s, and this sigma measures basically entropy change within the boundary. So if you consider this system and surrounding this resistor plus surrounding both as your system, okay, so then the resistor becomes a subsystem in that case. Then this will become your boundary. And this equation will measure entropy generated within that.
बाउंड्री मतलब विद इन द प्रोसेस, क्योंकि इस बाउंड्री के अंदर प्रोसेस हो रहा है, इस बाउंड्री के बाहर तो पता भी नहीं चल रहा है क्या हुआ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहले तो यहाँ ये लगा देते हैं, ये दिस इज एंट्रोपी इन माइनस एंट्रोपी आउट, करेक्ट। There is some lag today. I don't know what's the reason. Just a minute, I'll close some applications. Is that related to applications? Just a minute. Okay. सो हमने पूरा सिस्टम और सराउंडिंग ले लिया है, तो ना कोई एंट्रोपी इन है ना कोई एंट्रोपी आउट है, इसलिए ये वाला पार्ट आपका सिग्मा will measure entropy of the universe, and this would be delta S resistor plus delta S surrounding. Okay. Now what is delta S resistor? Is zero. Discuss. What is delta S surrounding? See, delta S surrounding is nothing but surrounding is accepting heat at 2500 joule and at the temperature of what is the temperature of surrounding? It is given 27. The surrounding is also 27. So it is accepting heat at 27 degrees Celsius. Therefore, its entropy will increase 2500 by 20 plus 270. So that makes it 8.3 joule per. Next. Now the next part of the question states that the same current is maintained for the same resistor but now thermally insulated. Okay. अब हमने क्या करा है, सेम करंट को सेम रजिस्टर में एक इंसुलेटेड एनवायरनमेंट में फ्लो करा है. This is I equal to 10 ampere and this is R equal to how much ohm it was? 25. अब इंसुलेटेड है मतलब थर्मल एनर्जी अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं निकल पाएगी, और थर्मल एनर्जी जब अंदर ही रहेगी तो टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा. ठीक है, इसलिए आपको मास भी दिया हुआ है इसका 0.01 किलो और आपको दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट 0.82. ये मटेरियल हीट रजिस्टर की मटेरियल. Okay. So now this I equal to 10 ampere and 25 ohm, what it will give? This will basically tell you the amount of heat generated, and of course the same current is maintained for the same resistor but now thermally insulated. Now so basically obviously over here also the current is maintained for 1 second. Okay. So if you take the heat generated, total thermal energy generated, that would be 2500 joule only. Because of it, the rise of the there will be rise in the
temperature of this resistor MC till that. Okay. So this will help us to calculate the change in the temperature. So this would be the change in the temperature. Earlier it was 27 degrees Celsius. Now this is a change. So you can add this to get the final temperature. So it can be written as a 27 plus 273. That is 300 here. So its initial state 1, if we call it as initial state as I and final state as F. So Ti is 300 Kelvin. TF is just have to add 297, 597. Okay. So that is a whole way forward. But what we have to calculate? What is the entropy change of the resistor and what is the entropy change of the impedance? How will you calculate this entropy change? See, in the previous problem, अगर आप ध्यान से देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है देखने की कि ये हीट रिजेक्ट कर रहा है, फिर भी इसकी एंट्रोपी चेंज नहीं होगी. क्यों? क्योंकि जितनी एंट्रोपी वो बाहर निकाल रहा है उतनी जनरेट भी हो रही है थर्मल एनर्जी के कारण. तो बेसिकली एंट्रोपी चेंज होगी कि नहीं होगी सिस्टम की, वो डिपेंड करता है उसकी स्टेट चेंज हो रही है कि नहीं हो रही. इसलिए तो एंट्रोपी प्रॉपर्टी है और इसका ही तो मतलब होता है कि एंट्रोपी प्रॉपर्टी, यही तो यहां पर फिजिकली एक्सप्लेन कर रहा है. इट्स अ प्रॉपर्टी. तो यहां पर भी यहां पर अब क्या हुआ है, रजिस्टर की स्टेट चेंज हुई है. दो देयर इज नो हीट ट्रांसफर, यहां पर हीट ट्रांसफर नहीं होने वाला है, बात इंसुलेटेड है. बट स्टिल देयर इज अ चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. व्हाई? बिकॉज the state of the system has changed, the state of the resistor has been changed, and this is the beauty of this problem, that even when, मतलब सोचने की बात है, that when in case there was heat transfer but there was no delta, there was no change in entropy of. But in second case there is a heat transfer. Entropy state. यार ये लैग कर रहा है, मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए. हो सकता है उससे थोड़ी स्टेबिलिटी है. ऑलराइट, नाउ
अब कैसे कैलकुलेट करेंगे ये तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, वी नो इट ऑलरेडी, बट हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम। आपको यहाँ पर स्टेट दी हुई है 1 से 2 गए आप, बट ये जो है ये पाथ नहीं पता आपको। आप एक रिवर्सिबल पाथ बना लीजिए, मतलब क्या करिए, आप इस रजिस्टर की एंट्रोपी चेंज करिए हीट ट्रांसफर करके, और इसका टेम्परेचर 300 डिग्री 300 केल्विन टू 3 कितना दिया हुआ है 597.62 केल्विन तक ले जाए। रिवर्सिबली धीरे 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 हीट ट्रांसफर करके, उस केस में आप 300 से स्टार्ट करोगे, फिर 300 0.1, फिर 300 0.2, ऐसा करते 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 छोटी छोटी हीट ट्रांसफर करके रिवर्सिबली आप इसका ये पाथ फॉलो कराकर इसका स्टेट चेंज कर सकते हो। इस स्टेट चेंज से भी वही एंट्रोपी चेंज होगी जितनी इस रिवर्सिबल से होगी। क्यों? क्योंकि इनिशियल स्टेट और एंड स्टेट सेम। अब कैसे करोगे सर? So we know that delta S equal to mc ln T2 by D. This as we have done many times. What is C? Okay, so let me calculate it. Ln into 0.84, 0.01 into 0.1. Check. It's coming out to be approximately 5.789 joule per Kelvin. So that's how we do it. And of course, there is one more thing over here to calculate the entropy change of the universe. अब यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज कैसे निकालोगे? सिस्टम प्लस सराउंडिंग, अब सराउंडिंग के पास तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो जो भी चेंज होगा वो सिस्टम का ही होगा। ठीक है, तो दिस इज बोथ आर सेम। यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज डेल्टा एस रजिस्टर एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा एस यूनिवर्स। ओके फ्रेंड्स, so this is a very good question. You should practice one more time to further stretch your imagination or understanding for entropy. चलिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करिए। दिस इज रियली गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम फॉर यू। ये शायद काफी सारे और कंसेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग करेगी। ये क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, इसलिए मुझे भी लिखना ही पड़ेगा यहाँ पर, बट मैं बता देता हूँ आपको कैसे। A hypothetical device is supplied with ठीक है, तो देखते हैं। Hypothetical device, this is supplied with 2 kg per second of air at इसका जो प्रेशर है this 4 bars, टेम्परेचर है वो 300, नॉट 27 ही प्रेशराइज्ड एयर 4 बार पर एंट्री ले रही है। अब क्या होता है, इस डिवाइस से इसकी 2 सेपरेट स्ट्रीम हुई। So one of the stream is emerging out at
1 bar and 300 Kelvin. And another stream is emerging out at 1 bar and 330 Kelvin. So 330 Kelvin and 273 सेल्सियस में से अगर कन्वर्ट करें ताकि फील आए थोड़ा सा हमें, तो ये 57 डिग्री सेल्सियस पर बाहर निकला और ये 300 Kelvin. No, sorry, not 300, 270. I'm sorry, this is 270. It's 270. 273 minus 270 is, of course, your minus 3 degrees Celsius. Now, there is something interesting. One is a cold stream. And another is a hot stream over here. What you have to calculate or what you have to determine is determine whether such device is possible and this is yours. भैया आपके सामने मान लीजिए कोई आया है और आपके पास खूब पैसा है, मान लीजिए यू आर अ वेंचर कैपिटलिस्ट एंड समबडी इज सेइंग यू एंड आस्किंग यू फॉर फंड्स. वैसे भी अब फंडिंग का ही जमाना है, तो आपके पास तो खूब पैसा है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आप वो पैसा किसी को भी दे दे, और वो भी ऐसे इंसान को जो आपको बेवकूफ बना रहा है या नहीं भी बना सकता, हो सकता है. तो आप क्या करोगे? आपके पास जब एयर ब्लो कराऊंगा 5 बार और 300 केल्विन पर, तो उसकी 2 स्ट्रीम निकलेगी, एक ठंडी -3 डिग्री पर और एक निकलेगी 57 डिग्री पर. ठीक है, और एक डेटा और दिया हुआ है आपको कि यहाँ पर मास फ्लो रेट सेम है दोनों स्ट्रीम का. ठीक है, तो 1 kg पर सेकेंड एंड 1 kg पर सेकेंड, इसे 2 बोल देते हैं. अभी ओपन सिस्टम का क्वेश्चन होता है और इसे 3 दे. तो कैसे सोचिए, इस पे क्या विचार है आपका कि कैसे निकालेंगे इस प्रॉब्लम को? whether such kind of devices are possible, not possible, what should be your approach, उसके बारे में सोचिए कि आपकी अप्रोच क्या रहना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व. देखिए मैं बताऊं, पहले नजर में तो बच्चों को लगता है बेवकूफ बना रहा है, बिना कोई कूलिंग के -3 डिग्री पे कैसे पहुंच जाएगा यार. ऐसा एकदम मत सोचो. आपको मैंने कहा है कि डिवाइस पॉसिबल होगा या नहीं, आप तो कैलकुलेट कर लो. सिग्मा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो पॉसिबल, सिग्मा लेस देन 0 तो नहीं. मैंने आपसे कहा था कि कुछ कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पर आपको पता नहीं चलेगा, कि आपके इंट्यूशन से आप पता नहीं कर पाओगे कि ये डिवाइस पॉसिबल है. क्योंकि मैं अगर आपसे पूछता कि डियर बताओ ये प्रोसेस 50 डिग्री टू 30 डिग्री हीट ट्रांसफर का जो है ये फिजिबल है या इनफिजिबल है, तो आप बोलोगे सर फिजिबल है, तो इसमें सिग्मा ग्रेटर देन 0 होगा. और इसमें अगर मैं आपसे पूछूंगा सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर ये सिग्मा लेस देन 0. तो ये तो इंट्यूशन से पता है आप, बट ये चीज इंट्यूशन से नहीं पता. और डे 1 मैंने आपको लेक्चर पे यही समझाया था, याद कीजिए. To identify whether the process is feasible or not, we need another law to check feasibility of the process. शायद जो मेरा पहला लेक्चर था
लेक्चर 1 ऑल्सो आई टोल्ड यू, ये देखिए इस तरह का डिवाइस पॉसिबल है या नहीं बता सकते हो। तो ये वही क्वेश्चन अब आ चुका है आपके सामने। ठीक है, तो चलिए इसे अब समझते हैं, आंसर करते हैं। अब हम जानते हैं एंट्रोपी इन माइनस एंट्रोपी आउट प्लस जनरेशन इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर बेसिकली अब आपका सिस्टम तो नहीं है, ये कंट्रोल वॉल्यूम है। ये ओपन सिस्टम बन चुका है। ग्रीन से हाईलाइट। इसे फंडामेंटली तो यहाँ पे आपको रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम लगाकर सॉल्व करना चाहिए, बट ठीक है, अभी आप कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, है ना। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंट्रोपी करना होगी आपको वहाँ पर। ये कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम है, कंट्रोल वॉल्यूम है बेसिकली, तो कंट्रोल वॉल्यूम के लिए वही यूज करेंगे। ठीक है, और ये स्टडी स्टेट में है, तो इसकी एंट्रोपी चेंज जीरो होगी, सबसे बड़े वॉट एवर इज कमिंग इन इज गोइंग आउट। So the system is operating at a steady state. There is no change in the state of the fluid at any particular location. So for that reason, it's a steady state, and therefore change in entropy of the system is, and the change in the entropy within the control volume is zero. Okay. अब यहाँ पे ना तो कोई हीट आ रही है ना तो कोई हीट जा रही है, मतलब इन और आउट जीरो। नहीं नहीं नहीं, मास आ रहा है और मास जा रहा है, तो वो ध्यान रखें। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, इससे जो आ रहा है m1 डॉट, और इसकी एंट्रोपी है मास की s1, m2 डॉट मास की एंट्रोपी m2, और m3 डॉट मास की एंट्रोपी, क्योंकि मास भी कुछ ना कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी अपने साथ लेकर आएगा, उसे हमने s1 लिखा है। तो उस एनर्जी को तो नहीं, बट उस कारण जो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है उसे m dot 1 s1 is coming in and going out is m dot 2 s2 plus m dot 3 s3 plus 100 equal to, now we know that m dot 1 is equals to m dot 2 plus m dot 3. Mass conservation, simply whatever is coming in steady state. This is s1 minus m dot 2 s2 plus m dot 3 s3 plus sigma equal to 0. फ्रेंड्स, बंद हुआ है मेरा। क्या ये शेयरिंग दिख रहा है आपको? Close the last shared application, so application share was right. Okay, just a minute, friends. चलिए, so now m dot 2 minus m dot 3 plus sigma equal to 0. चलिए तो लिखते जाते हैं, इसको सॉल्व करना है हमें। m dot 2 s1 plus m dot 3 s1 minus m dot 3 s3 माइनस m dot 2 s2 प्लस सिग्मा इक्वल टू 0। तो हमें तो m dot की वैल्यू निकालनी, सॉरी सिग्मा की वैल्यू निकालनी। सिग्मा हो जाएगा आपका
m dot 3 s1 minus s3 उधर जाके s3 minus s1 plus m dot 2 s2 minus। अब s3 minus s1 और s2 minus s1 कैसे मिला? तो आपको ये स्टेट्स दी हुई देखिए, और ध्यान दें कि ये क्या है आपका, ये आपकी एयर है। एयर कैन बी ट्रीटेड एज एन आइडियल गैस, so this is air of course given over here, and air can be treated as an ideal gas, and for an ideal gas change in entropy, I hope you remember, s2 minus s1 equal to अगर हम इसे ये पर यूनिट मास है तो cp ln या p t2 minus p1 minus r ln p2 upon p1। मैं आपको चेक करा देता हूँ एक बार, कल की में लिखा था मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। dv by dt तो यहाँ पर h2 minus h1 equal to cp ln t2 by t1 minus r ln p2 by p1। इसे अगर हम कंप्लीट करें, एयर की cp की वैल्यू 1.005, t2 by t1 कितना है भाई? t2 है आपका 330 और t1 है आपका 300, तो 330 upon 300 minus r for air is 287, तो भी 1.005 इसको 0.287 किलो जूल में चलेगा ना, तो 1.005। ठीक है, यहाँ आएगा P2 by P1, pressure at 2 is 1 bar and pressure at 2 is 1 bar and pressure at 1 is 4 bar। Solving this we'll get let me do it quickly। Multiply by 0.287 makes it plus 978 330 divided by 300 into 1.005। क्या 0.4935 जूल पर किलो जूल पर केजी के, इसमें मास मल्टीप्लाई करेंगे तो केजी हट जाएगा और
एक्चुअली केजी पर सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे तो किलोवाट पर कैलकुलेट आ जाएगा। सिमिलरली आपसे गेट में ना डायरेक्टली S2 माइनस S1 ही पूछ लेंगे, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज के ऊपर। S3 माइनस S1, what is S3 minus S1? CP ln T3 upon T1 plus R1 here. This is T3 is how much? T3 270. And T1 is 3. T3 is bar 0.3 minus 720. So basically now what you have to do is you have got S3 minus S1, you just have to feed the values and you are getting a positive answer. So 0.292 and mass flow rate was 2 kg. So 1 kg will get divided. So actually you have to add the same thing. 0.292 plus 0.493 watt per gallon. Okay. So that boils down to plus 0.493, 0.78 watt per gallon. Greater than entropy generated is greater than 0. मतलब such kind of devices are possible, absolutely possible. Okay, और ऐसे devices को हम कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं? Any one of you can tell me? War. Okay, कभी रेफ्रिजरेशन डिटेल में पढ़ोगे तो आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की कूलिंग में मदद करता है ये, कभी कभी कूलिंग ऑफ मशीनिंग ऑपरेशंस में भी करता है, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी लो होती है, बट इसकी खूबसूरती बात यह है कि इसमें कोई मूविंग डिवाइस नहीं, इट इज फ्री ऑफ, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ मेंटेनेंस। ओके फ्रेंड्स, सो ये हाइपोथेटिकल प्रूव टू बी राइट, एंड इफ यू इन्वेस्ट योर मनी इन दिस, माइट बी पॉसिबल दैट यू कैन डू दैट। So this is very important and interesting question over here, which we have just solved. चलिए आगे बढ़ते हैं। Let me just check once कि I completed all the important problems. क्योंकि thermodynamics all about solving problems. There will be problem which will be coming in future regarding this pure substance, but for now I think yes, we have done.
these are some problems, and I recommend you must solve some previous year questions now. You will be able to solve it. I'll be also taking previous year question session, but before that, I think we must start with a new chapter. And in fact, second law of thermodynamics, in fact, a new topic I must say, because that's a part of second law of thermodynamics only. Okay, so we call it as exergy. So maybe for your just for your information, I'll write over here exergy. I'll continue on the same page. Sure. So let's begin with this. So I'll take a 5-minute break and then we'll start. Okay.
All right, friends. So let us proceed now. चलो स्टार्ट करते हैं with a new heading available, new heading, new chapter, जैसा आपको लगे ले लीजिए इसे. Available energy और exergy भी कहते हैं. Have the same meaning, absolutely same meaning. और availability भी कहते हैं, है ना? मतलब जैसे एक ही भाई के अलग अलग नाम होते हैं. घर पे मोनू और बाहर कुछ और समथिंग लाइक दैट. अवेलेबिलिटी. ठीक है, तो विल बी स्टार्टिंग विद दिस नाउ एंड when we'll be completing with this will actually create the complete understanding of the subject. Okay, चलिए. So I am going to start with this. ठीक है, second law has divided energy into two categories. One is a high grade energy. Another is low grade energy. पहले भी बात कर चुका हूं मैं आपसे इस बारे में. हाई ग्रेड एनर्जी मतलब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसके साथ जिसके ट्रांसफर से एंट्रोपी ना बढ़े सिस्टम की. और लो ग्रेड एनर्जी मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड. और हम हमेशा ह्यूमंस ऑलवेज ट्राई to convert disorganized form to organized form. That's why you send or we send students or kids to school also, so that initially they are very disorganized. When they go to school, they learn many things and they become kind of organized. Maybe nowadays I'm not very sure about it, but yeah, earlier it used to be. So work is considered to be high grade energy and heat is considered to be a low grade. और सीधी सी बात है कि मैं हीट को वर्क में एक साइकिल में %100% complete conversion, I'll say conversion, not possible. So, but work can be completely converted into it. %100% in an ideal case. You pass an electric current through a resistor. How much the amount of current you have passed, all the energy will get converted into thermal energy. Most of it. तो क्वेश्चन अब यहां पर आ जाता है इंजीनियर के सामने कि सर 100 जूल वर्क सिलेक्ट करें या 150 जूल हीट सिलेक्ट करें. तो यहां पर बात आती है क्वालिटी. तो हमें क्वालिटी कैलकुलेट करना है कि भाई क्वालिटी किसकी ज्यादा होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे. क्योंकि 150 जूल हीट तो काम आने वाली है नहीं. करोगे क्या 150 जूल हीट को कन्वर्ट ही करोगे टाइम में वर्क. अब ये जो 150 जूल हीट है इसको वर्क में कन्वर्ट कैसे करोगे आप. So this 150 joule of heat can be converted into work by the help of a heat engine. और बेस्ट से बेस्ट हीट इंजन भी लगा लो तो कितना वर्क आप प्रोड्यूस कर सकते हो. That would be available energy of this 150 joule thermal energy. इसे पूरा तरीके से अगर मैं कंप्लीट करूं
तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये है एक हीट इंजन, इसे रिवर्सिबल मानते हैं। रिवर्सिबल मतलब भाई फ्री फ्रॉम ऑल देयर रिवर्सिबिलिटी, सो व्हाटएवर बेस्ट यू कैन कन्वर्ट हीट 150 जूल इनटू वर्क, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो पाएगा। दिस इज मैक्सिमम वर्क दैट यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम दिस। अब यहां पर इस हीट इंजन को अगर ऑपरेट करना है तो दो और चीजें चाहिए कि 150 जूल ट्रांसफर कर रहा है, आई मीन टू से दैट कि वो रिजर्वायर कौन सा है, तो इसका टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल कि ये भाई किसी 900 केल्विन पे ट्रांसफर कर रहा है, और ये रिजेक्ट किस पे कर रहा है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर भी यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तब जाकर ये आपका वर्क आएगा। What will be this maximum work over here? So we calculate this maximum work, that will be efficiency multiplied by 150 joule, and efficiency is very simple to calculate. 1 minus T lower upon T higher into 150. So that simply means 600 into 150 divided by 900. And that makes 100 joule of. So now actually this, I mean coincidentally it came. So this has, if converted into heat, maximum you can get 100 watt of work, 100 joule of work. But यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि ये 900 और 300 पे भी डिपेंड कर रहा है। देखो आप ये, तो what we call it as, this is available energy of 150 joule at 900 Kelvin with respect to surrounding at 300 Kelvin is equals to maximum work that engine will be doing, and that is equal to 100 joules. Now, I'll give you one more example about the same thing. So what I'll do is I'll increase this temperature. Let's say I'll make it 1200 Kelvin. Reverse it. So maximum work. और अभी सराउंडिंग हम 300 पे, तो ये क्या आएगा फिर, एफिशिएंसी जो कि मल्टीप्लाई बाय 150 जूल। So that boils down to 112.5। तो आप देखिए अब आपको ज्यादा वर्क मिल गया, क्यों? क्योंकि यही 150 जूल अब आपने हायर टेम्परेचर से रिलीज कर। तो यहां से क्या सीखने को मिला, यहां से ये सीखने को मिला कि 150 जूल में को मैं कितने वर्क से कितना वर्क प्रोड्यूस कर सकता हूं मैक्सिमम। देखो मिनिमम की तो कोई कैटेगरी नहीं है, मिनिमम पूरा का पूरा फ्रिक्शन में भी खत्म कर सकते हो तो जीरो वर्क मिलेगा। तो minimum can be 0, maximum can be, in first case it was 100 and in second case it was 112.5 joules. So what I'm trying to say over here is that
this is very important concept over here, that heat, which is a form of disorganized energy, has its importance कि वो किस टेम्परेचर पे रखी हुई है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कुछ इस तरह की एक बेवकूफी तो नहीं बोलूंगा, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दैट वर्ड, बट या मजबूरी बोलना ज्यादा बेहतर होगा, कि मान लीजिए आपके पास 5000 केल्विन पर थर्मल एनर्जी रखी हुई है, 1000, आप उसे लेकर आ रहे हो किसी इंटरमीडिएट टेम्परेचर पर, और इसे लेकर आ गए आप मान लीजिए 1000 के अंदर। 1000 समझा क्या हो रहा है, इसे आप एक काम करो, ले लो यार, वो लेना है 1500, चलो इसको रिजेक्ट, तो आप हमेशा भी एम्बिएंट कांस्टेंट ही रहते हैं, एम्बिएंट 300 केल्विन से ही रहता है, इसमें इतना वेरिएशन नहीं होता है, अलग अलग जगह जाओगे तो अलग अलग होगा, बट अभी के लिए हम इसे सेम रखते हैं। एक लोकेशन पे तो एक एरिया में तो एक ही रहेगा, उस एरिया में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो यहाँ तो यही है। ये 1500 जूल आपको कलेक्ट, उस पर कलेक्ट करिए और फिर कलेक्ट करके यहाँ में, so that points down to this is your maximum work basically, and that is 1 minus T lower upon T higher into 1500 makes it 300 divided by 1200, 0.75 multiplied by 1500 joule, that is 1125. Now what if it would have been कि ये वाला पार्ट नहीं होता, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि डायरेक्टली आप 5000 से ट्रांसफर कर, if 1500 and मैक्सिमम अगर हम यहाँ देखें तो एफिशिएंसी तो 0.75 नहीं है, अब सॉरी 1 minus T lower, so that makes it 5000 minus 300 divided by 5000 into 1500, so that is 14, the difference. So divided by 5000, I think this is 106. So this is coming out to be 94. So see, your efficiency is coming closer to 100. It will never become 100. This is 0.7. 1410. So you can compare this. There's a huge difference between. Out of 1500 joule, you are getting 1410 like this. Okay, but there is a practical. तो इसे आप consider करें like a sun. और ये आपका कलेक्टर है, एग्जाम्पल है बस, ठीक है, जिस पे आप हीट कलेक्ट कर रहे हो। तो ये आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि सन से जो एनर्जी आ रही है वो इतनी डिस्ट्रीब्यूटेड आ रही है कि आप इंजन को इस तरह से दे नहीं सकते, आपको उसे कलेक्ट करके कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, और जिस टेम्परेचर पे आप कलेक्ट करोगे वो टेम्परेचर आप 5000 केल्विन नहीं पहुंचा सकते क्योंकि मटेरियल की लिमिटेशन है आपके पास।
तो एक लिमिटेशन तो ये है कि सन की एनर्जी जो है वो है तो सही बट बहुत दूर है, तो इसलिए उसको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, और कॉन्सेंट्रेट करने के लिए फिर आप उसको इतने हाई टेम्परेचर तक नहीं ले जा सकते क्योंकि आपके पास मटेरियल की लिमिटेशन है। तो ये तो एक एग्जांपल है टेम्परेचर का। एग्जैक्टली मुझे भी अभी याद नहीं है कि पैराबोलिक रिफ्लेक्टर जो हम यूज करते हैं उनके टेम्परेचर कितने होते हैं, बट ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर आप लें तो दिस मेक सेंस। तो ये हो सकता था बट ये ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता है। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं अलग अलग एग्जांपल से आपको प्रैक्टिकली फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि देयर इज अ टोटल इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मल एनर्जी की कितने टेम्परेचर पे वो रखी हुई है। प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पर एक मैं पाई चार्ट बनाऊंगा काइंड ऑफ किसी भी एक का, जैसे अगर इसका भी पाई चार्ट मैंने बनाया, इफ यू टेक दिस 150 एज अ कंप्लीट, देन आई थिंक 150 का अगर तीन पार्ट किया जाए, so one part would be this 50 joules, and another part would be 100 joules. So this is the total crunch of 150 joules. This is available energy, and this is called as unavailable energy. Okay. This is sometimes also called in books. We find it on energy, energy, energy. Okay, something like that. Now, if you observe over here, then definitely there is a loss. I'll write first some statement over here that there is a loss of available energy. How much is that loss? Can you tell me? Uh, it could be 1410, but it is 1125. तो ये कितना हुआ आपका 41410 minus 1125. That boils down to 285. एक काम करते हैं, ये तो क्यों हुआ? क्योंकि आपने 1500 जूल को 1200 की बजाय 5000 कैल्विन की बजाय 1200 कैल्विन पर रिलीज किया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम को कुछ वैल्यूज के साथ लेते हैं, ये T1 वेरिएबल्स के साथ, ताकि एक रिजल्ट डिराइव कर सके, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके। इसको आपने T2 पे छोड़, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस, और यहां से इसी क्यू को आपने T0 पे लिया, और यहां से आपको W। So available energy of Q at T1 with respect to T is equals to 1 minus T lower upon T higher into Q. Available energy of Q at T2 with respect to T naught, 1 minus T lower upon T higher into Q. Loss कितना हो? Loss would be equal to loss of available energy 1 minus T naught by T1 Q minus 1 minus T naught by T2. So I think this Q and this is minus Q, they will go away. Minus T naught upon T1 okay, sorry, this one go. I'm sorry. This one.
So that loss is equal to Q 1 upon T2 minus 1 upon T1 into T. Sorry. Now there is an irreversible process associated over here. And now we can calculate the entropy generated because of this irreversible heat. So alternatively, let us calculate entropy generated during irreversible heat transfer. So let us consider this entire as a system. So nothing is in and out. So whatever is generated is of this system plus this system. This system is minus Q upon T1 plus this system is Q upon T2. So 1 upon T2 minus 1 upon T1. Right? So this makes sense now. And this entropy. And this is your kind of entropy generated, sigma. Okay, and this loss of available energy is what we call as irreversibility. This is one definition of irreversibility. So irreversibility can be viewed as irreversibility can be viewed as lost opportunity or loss of available energy, which is equal to, हम इसे I से denote करेंगे, and this is equal to sigma into T, where sigma is the entropy generated. Sigma इसको ऐसे भी लिख सकते हो, entropy generated. So whatever entropy is getting generated, because of that there is irreversible. मैंने आपको बताया था कि I इक्वल टू टी नॉट सिग्मा में डिराइव करूंगा फ्यूचर में, तो ये एक तरीका है इसको देखने का. चलिए let us further extend our discussion on the same. In general, how to calculate availability? That is a question. Availability of a closed system. या अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं. अवेलेबल एनर्जी थोड़ी और बेटर और जनरल डेफिनेशन, बेटर नहीं जनरल नहीं, ये तो हमने हीट इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी. तो अवेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, ध्यान से याद रखिएगा इसे. अवेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज, इसे एक्सर्जी भी बोल सकते हो, इज डिफाइंड एज maximum useful work. Very important. Maximum useful work that is obtainable in a process in which system comes to equilibrium with the surroundings. That is, system
जब सराउंडिंग की स्टेट में आ जाता है तो हम कहेंगे कि सिस्टम इज इन डेड स्टेट, दैट इज सिस्टम गोज टू डेड स्टेट। मतलब ये देखिए, ये डेड स्टेट है बात। डेड स्टेट का मतलब क्या हुआ कि आपका जो सिस्टम है, जैसे चाय है, चाय मान लीजिए, दूध मान लीजिए, जो आप पीते हैं वो मान लीजिए, गर्म चीज कुछ भी या ठंडी चीज 80 या 60 डिग्री पर, तो इसे हम कहेंगे दिस इज एलिवेटेड स्टेट। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये सराउंडिंग 30 डिग्री पे होगा, आफ्टर सम टाइम दिस विल कम 30। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज डेड स्टेट। तो जब ये 60 डिग्री से 30 डिग्री आई तो डेफिनेटली इसने कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट करी होगी। तो इसने जो भी हीट रिजेक्ट करी है, ठीक है, उस हीट से मैं कितना वर्क प्रोड्यूस कर सकता था, दैट इज द अवेलेबल एनर्जी ऑफ दिस कप ऑफ टी ओवर हियर। एक्चुअली में तो कुछ नहीं करी होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, रियलिटी में तो आपको भी पता है कि 60 डिग्री से 30 डिग्री में जाएगा। अगर आप ग्लास रख के भूल गए, आपने पी लिया तो बात अलग है, पी भी लिया तो भी अब उसका तो साइंस ही बहुत अलग है। बट अगर नहीं पिया मान लीजिए और 60 डिग्री पे रखा रहने दिया आपने, तो थोड़ी देर बाद वो 30 डिग्री पे चला जाएगा, और जब वो 60 से 30 डिग्री पर गया, कोई वर्क थोड़ा प्रोड्यूस हुआ। बट इसकी अवेलेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप इसे 60 से 30 ले जाओगे, इसमें कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर करेगा, तो एक मैक्सिमम कर सकता है, ये मैक्सिमम कितना वर्क प्रोड्यूस करेगा, तो एक हाइपोथेटिकल इंजन लगा दो, सराउंडिंग कितने पे है, 30। तो ये इसकी चाय की अवेलेबल एनर्जी होती है। ये कैसे कैलकुलेट करता है, टीच यू दैट, आई टेल यू दैट, बट दैट इज दी concept over here. In fact, let us do it. Let us do it. तो बेसिकली यहाँ पे लाइन अगर मैं डायग्राम से दिखाऊं आपको एनर्जी लेवल से, तो ये एलिवेटेड स्टेट है और आप जीरो स्टेट पर आ गए। तो ये यहां से लेकर यहां तक आने में जितना वर्क आप प्रोड्यूस कर सकते थे, किया नहीं वो नहीं कह रहा हूं, कितना हो सकता था, मैक्सिमम ऑब्टेनेबल यूजफुल वर्क, ऑब्टेनेबल यूजफुल वर्ड भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी तो आप मैक्सिमम यूजफुल ही है यहाँ पे तो सारा, क्योंकि जो भी मिल रहा है आप उसे एक तरह से, अब वो भी एक क्वेश्चन है, आप यूज करते हो नहीं करते हो, दैट विल कम टू इट। तो 1 से लेके 0 तक की बात, डेड स्टेट तक आ गए। यहां से यहाँ आने के दौरान आपने कितना डिग्री हुआ, जितना वर्क ऑब्टेन हुआ, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अवेलेबिलिटी। इसे कैसे सॉल्व करें, इसे सॉल्व करने के लिए एक सीधा सा तरीका है। आपको पता है ये 60 डिग्री से 30 डिग्री है, करेक्ट। तो बीच में मान लो कोई भी एक टेम्परेचर है टी, जब इसने डी क्यू हीट रिजेक्ट करी, और ये भी 30 डिग्री, तो ये डी डब्ल्यू वर्क प्रोड्यूस हुआ। अब ये डी डब्ल्यू वर्क ही आपका आंसर है, बेसिकली वर्क ही आपका आंसर है। बट होगा क्या, आप जानते हो कि वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है, अच्छा एफिशिएंसी होगी वेरी 1 माइनस टी लोअर विच इज टी नॉट, इसको इन जनरल टी नॉट लेते हैं, अपॉन टी हायर। अभी टी हायर चेंज हो रहा है इसलिए एफिशिएंसी चेंज हो रही है, एफिशिएंसी चेंज हो रही है इसलिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा वर्क को। जैसे मैं जनरल टी मान लेता हूँ, और हीट उस तरह कितना हीट ट्रांसफर हुआ, डी क्यू हीट। If you want to calculate this work over here,
then you have to integrate it 1 minus T lower upon T higher. और ये रिवर्सिबल है, तभी टी लोअर अपॉन टी आएगा, मैक्सिमम कितना कर सकते तो देखते हैं। यहाँ पर डी क्यू को हम लिख सकते हैं एम फाइनल टेम्प, मतलब अभी देखो, अभी ये टी से कहाँ जाएगा, टी से ये टी माइनस डी टी की तरफ जाएगा, ठीक है। डी क्यू हीट रिलीज करेगा तो टेम्परेचर टी से टी माइनस डी टी जाएगा ना, तो कितनी हीट रिजेक्ट करी इसने, डी क्यू एम सी फाइनल इज टी और इनिशियल इज टी, so dq is equals to mc minus mc. So let's boil minus mc 1 minus g1 by t dt, और आप यहाँ जाएंगे 1 से लेकर, मतलब 30 डिग्री से लेकर तो टी नॉट तक जाना है वैसे तो यहाँ पर, बट किसी इंटरमीडिएट स्टेट पर भी अगर आप आते तो भी दिक्कत नहीं थी, बट वो पूरा का पूरा अवेलेबल एनर्जी नहीं गिराता, तो आपको वो अवेलेबल एनर्जी गिलाने के लिए इसको इनिशियल स्टेट से पूरा जीरो तक करना पड़ेगा। यहाँ पे टेम्परेचर की लिमिट्स लगी, चलिए देखते हैं। So this is minus mc dt का इंटीग्रेशन t1 से t0 माइनस माइनस ये प्लस हुआ mc t0, फाइनल माइनस इनिशियल mc log upper limit t1 c log t1 t log t वाला, ठीक है। ये वाला है आपका mc t1 minus t0 plus mc log t1. So the maximum useful work obtainable when you will operate a reversible heat engine between 60 to 30, when the chai gets thandi from 60 to 30 degree, okay, tea gets cold from 60 degree to 30 degree, and this much is the maximum work possible. But we all know that we are not going to get anything perfect because we won't do it, right? Nobody is going to do that. Actually, we won't be doing that, right? So, of course, if you want to calculate, now there is another problem. The same cup of tea will take at 60 degree, and it is going rejecting heat with the surrounding at 30 degree. Now you want to calculate that what is the entropy generated during the process. Calculate entropy generated during the process. Calculate entropy generated during the process. So basically it is going from T1 to T1. So it's an irreversible heat transfer process. Since it is a irreversible heat transfer process, and of course it's a natural process, definitely there is going to be some entropy generated, and that is what I want to calculate. Okay. तो चलिए करते हैं इसे कैलकुलेट। तो हमें पता है कि इट इज गोइंग फ्रॉम सम इनिशियल स्टेट ऑफ 60 डिग्री
to 30 degree via irreversible path. So we know the endpoints, but we don't know the path. So let's construct a reversible path, which will make a lot of sense over here between the same 2 points. And what we will do is इसको हम 60 से 30 एक thought experiment वाले path से ले जाएंगे, so that we know the intermediate parts and we can calculate the change in the entropy, because change in entropy has to be calculated for a reversible path, and then it could be extrapolated for irreversible path. That's what I have been teaching you since 2-3 lectures, and now the things will be making more sense to you. So over here, if you see, so how can we do this? हम यहाँ पर एक irreversible ट्रांसफर कैसे करोगे? अगेन अगेन जैसे 60 डिग्री आप यहाँ पे लेकर आ जाओ एक 59.99 का, तो फिर ये चाय हो जाएगी 59.99 की. It's just a thought experiment so that we can actually create a path, and once we create a path, we can calculate the change in entropy of the system, and we get the entropy generated. All right. So now you'll make it 59.98 and something like that. So there will be heat transfer. Its temperature will reduce to 59.98, and the story will go on till it reaches the temperature of 30 degrees. So that's what and that's how we actually interpret or we understand reversible heat transfer process. Though it is not, but we are bringing a change in a similar manner. So remember, this will only give you change in entropy. It won't give you entropy generated. It will give you change in entropy of the system. So how can you calculate it? So we know that at any, let's say, its temperature is T, it is rejecting heat dq. Its temperature is going down, so dq will be minus mc dt, and how to write this? Excuse me. So basically, I'm trying to calculate entropy change of a chai. That's what we are calculating. This is our boundary. This chai. Inside it, there is 60 degree. So that will be simply dq by t. We have done it many times. And it will be mc ln t naught by t. Degrees होगी तो negative sign automatically आ गया. So that is delta s t. Chai. Okay. Now there will be surrounding also. Surrounding is also taking some heat. So delta S surrounding would be there. अच्छा, surrounding तो constant temperature पे ले रहा है, कितनी ले रहा है? mc delta t, t naught minus t1. Sorry, t1 minus t naught. This is the amount of heat accepted by the surroundings from chai, and it has been at always it has been at temperature t naught. Okay. So what is delta S universe or sigma universe or entropy generated during the process? So delta S chai, we have done lots of problems. Then delta S surrounding. That makes mc ln t naught upon t1 plus mc t1 minus t naught upon. So this is your sigma t naught, right?
And yeah, of course, there was one T naught over here, right? We forget to write it over here, so I was searching for that only. Yeah, so that should make sense. So now, what is irreversibility? Sigma into T naught. For that, so MC ln T naught upon T1 multiply by T naught plus MC T1 minus पिक्चर कहाँ से घूम के कहाँ आ रही देखो आप. सो ये आज जो है आपका, अगर आप कंपेयर करो, this I is exactly similar to the work obtained. क्या इंटरप्रीट करें आज. भाई भाई ये साइन ऊपर नीचे क्यों है. साइन की गड़बड़ी तो समझना पड़ेगी भाई. टी नॉट बाई टी वन, टी नॉट बाई टी वन, डेल्टा एस चाहे नेगेटिव होना चाहिए. टी नॉट छोटा है, टी वन बड़ा है. ठीक है, छोटी डिग्री की वजह कोई डाउट नहीं है. Just give me a minute. I'll just check with the sun. You are about the minute. हाँ भाई करती कमी. Okay, T1, T naught. Okay, so mistake is over here. गलती पकड़ में ही जाती है. हम 1 से 0 जा रहे हैं, राइट. 1 से 0 जा रहे हैं. There should be T naught by T. मैथमेटिक्स में गलती हो सकती है, फिजिक्स में गलती क्या हो सकती है. ओके, फाइनली तो क्या फिजिकल मतलब है इन सब चीजों का. देखिए, इरिवर्सिबिलिटी और वर्क आपका सेम आया है. इरिवर्सिबिलिटी एक्चुअली में क्या होती है. इरिवर्सिबिलिटी होती है आपकी एक्चुअल वर्क या मैक्सिमम माइनस कुछ. ये एक इसे गॉडी स्टोडला थ्योरम कहते हैं. इस एग्जांपल से मैंने आपको स्टोड थ्योरम एक्सप्लेन किया. So what this theorem all says is, देखिए, this theorem states basically that I is equals to W max minus W actual. तो इस कप के केस में, चाय के केस में, मैंने मैक्सिमम वर्क कितना किया. मतलब मैक्सिमम वर्क तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक रिवर्सिबल हीट इंजन लगाओगे तभी हो पाएगा. इट्स बेसिकली हाइपोथेटिकल. तो सर वो इतना किया एज शोन हुआ. और एक्चुअल में कितना हुआ भाई. एक्चुअल में तो जीरो ही हुआ ना. फिर कैसे जीरो हुआ. अरे यार जीरो ही तो हुआ. बोले सर कैसे. अरे भाई चाय ठंडी हो रही है तो कोई एक्चुअल में वर्क कर रहे हो क्या. कोई इंजन लगा रखे क्या. नहीं नहीं नहीं. तो मतलब मैक्सिमम तुम कितना कर सकते थे. चलिए एक वैल्यू ले लेते हैं. लेट अस से दैट दिस कम्स आउट टू बी 250 जूल्स फॉर एग्जांपल. तो 250 जूल ऑफ वर्क would have been obtained if you get this cup of tea getting cooled. If you would have used that Carnot heat engine. But आप ऐसा कर नहीं सकते. आप ऐसा करोगे भी नहीं. ऑफ कोर्स कर तो सब कुछ कर तो पता नहीं आप क्या कर सकते हैं. आई शुड नॉट से दैट. बट हाँ, अभी आपने ऐसा कुछ किया नहीं. ये नॉर्मली ठंडा हुआ है और आपने कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं कराया. तो ये 250 एक्चुअली में जो कर सकते थे वो पूरा का पूरा वेस्ट हो गया आपका. सो दिस इज लॉस्ट वर्क एंड दैट इज नथिंग बट योर इरिवर्सिबिलिटी. एंड दैट इज व्हाट इज स्टेटेड बाय दिस थ्योरम. Boyce-Todla theorem. Okay, that is what it is called as. Just Todla theorem.
So I hope that makes sense to you. And just take this over here during the process and write it off. So what is the moral of the story, guys? Moral of the story is that irreversibility is basically the lost opportunity. Opportunity you have lost to produce work. Okay. Now students say that sir, this is a very long method of doing the things, right? अगर मुझे irreversibility यहाँ पर निकालनी है तो I have to do lot. I have to calculate entropy generation and all those things and blah blah blah. Okay, I'll give you one more way of calculating the availability. ठीक है, अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करने का एक और मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ऑलरेडी काफी सारे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ यूज करके हमने फॉर्मूलेज बना लिए हैं एंड दैट इज गिवन बाय फाइव अवेलेबिलिटी फंक्शन फॉर क्लोज सिस्टम. फर्स्ट आई डिस्कस. So for closed systems we have an availability function called as phi. And this phi is basically defined as u plus p naught v minus c naught. For u plus p naught v, I think that's what I still minus t naught s. तो आपको अगर अवेलेबिलिटी निकालनी है कि कितनी अवेलेबिलिटी या कितना मैक्सिमम यूजफुल वर्क हुआ है तो आप कुछ ना करिए फाइव वन माइनस फाइव नॉट कर दीजिए. पूरी डेड स्टेट से चले जाए, वन पे थे आप, फाइव नॉट चले जाए तो क्या आएगा आपका आंसर. चलिए देखते हैं हमारे केस में कैलकुलेट करना क्या सेम आता है. तो फाइव वन माइनस फाइव नॉट इज इक्वल्स टू फाइव वन इज यू वन प्लस पी नॉट वी वन minus T naught S1 minus U naught plus P naught V naught minus T naught S naught. Okay, friends. So, of course, initial volume and the final of this cup is same. So I'll quickly cancel this off over here, and u1 minus u naught minus t naught. If I take common, of course, so this will be s1 minus s1. This is change in entropy of chai. Okay, this is delta S chai. This is minus minus plus plus again minus 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 plus. That will create तो कैलकुलेशन में एक बार इशू है. फाइव वन माइनस फाइव इसको करेक्ट करो सर. ठीक भाई, एक मिनट मुझे चेक करने दो. माइनस टी नॉट एस वन है ना, ये माइनस वन नॉट मैंने दे दिया, वो उससे कैंसिल हो गया तो ये माइनस माइनस प्लस टी नॉट एस वन. तो ये एक्चुअली में ओके. It would be like plus over here and correct. Okay, so this s naught minus s1 is final minus initial, correct? Yeah, so final minus initial is only would be the change in entropy. So phi 1 minus phi naught would be, what is the u1 minus u naught, sir? MC delta t, MC delta t, t1 minus t naught over here plus
T naught. S naught minus S1. You have already calculated change in entropy of this chai. Delta S chai MC on T naught by T1. So this is MC ln T naught by T1, and I hope you have got the same result. MC T1 minus T naught, MC T1 minus T naught plus T naught MC ln T naught by T1. Okay, so this is another way of solving the problem directly by the help of formula. But this is, let me warn you with this कि ये क्या है, okay? How this, ये पूरी picture कैसे चल रही है? Let me explain this over here. Just give me a minute. ठीक है. ठीक है. अभी मैं आपको इसे कनेक्ट कर देता हूँ वापस से कि W एक्चुअल यहाँ पे 0 है. इस केस में W एक्चुअल 0 है. W मैक्स ये लिख देता हूँ एक तो. और ये एक तरीका है आपका अवेलेबिलिटी निकालने का कि कितनी अवेलेबिलिटी है. ओके, we can solve more problems and further understand. In fact, ये भी हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए कि अवेलेबिलिटी में चेंज कितना हुआ है, डिक्रीज कितना हुआ. देखो, अगर आप यहाँ पे थे तो आपके पास अवेलेबिलिटी कितनी थी? 5 माइनस. अब अगर आप एक लोअर स्टेट पर आ गए 2 पर, तो आपकी अवेलेबिलिटी अब कितनी है? अब है सर 5 माइनस 5. कितनी? So this was availability at state 1 and this was available energy at state 2. And this is available energy. मैं यार आपको थोड़ा सा यहाँ पर गाइड नहीं करना चाहूँगा. उसके लिए एग्जांपल और लेना पड़ेगा मुझे. We don't have time right now. So just let me see whether we have some scope right now. Just give me a minute, okay? ओके, चलिए अभी के लिए इसे ऐसे ही रखते हैं. मैं नेक्स्ट लेसन में आपको एक क्वेश्चन से यहीं से कंटिन्यू करूंगा, ज्यादा बेटर होगा. सो द चेंज और द डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी वुड बी 5 minus 5. That simple you can also calculate. That is one thing you have over here. And, let me give you a question I have with me right now. A moment. Okay, so I'll give you one question. You practice it before we start the next lecture. This would be from chapter exergy. Exergy. Yes. You try this one. Okay. In fact, you can find the solution in this pre-K answer books to solve problem. So I'm adding this question over here.
this is of course your homework problem, and okay, fine. So I think that would be sufficient for this session. Okay then. Should I add? Okay. So one more thing you can do. All right. So print a PDF for you. See you tomorrow. Next lecture tomorrow.